Yes, so this stack where you are using an element. Now if in the question, if it is asked that a student data stack with student records, because in exam you will get, practical exam you will get with a domain. Now here the same program I am keeping, only here the records. So here what I will do is, suppose student records contain roll number, name and marks. So a list, empty list I have created here, L equals to empty list, and inside this what I will do, I will take the list, I will append the values, or I am doing one more thing. Here only I am taking the empty list. I don't need it here. And here I am taking the roll number, RNO, enter the roll number, enter the name, enter the marks, name. So any variable name you can give. Only while taking the input you will use input, enter name, and last one is marks. So marks equals to same int. I am using integer marks here. If you want float marks, that also you can use it here. Okay, I will use here float marks. Hello 80 float marks, enter your marks. Now you will add in the list. So L equals to all the three, RNO, comma, name, comma, marks. This is inside a list, and you will append the list, only this much. Clear? So here in a list you are putting roll number, name and marks, and then your rest of the program will be same. Pop will not ask you for, okay, suppose in pop you want to, it is LIFO, last one will be deleted. So you cannot ask for the roll number which one to delete. So last one will be deleted. So only pop this, it will not ask anything. So pop for any question of stack, pop will remain same. Only in push, if it is student record and the column names, they have given attributes as roll number, name and marks, so this much. If it is flight record and they have given flight number, flight name and the amount, fare, so that you have to write here, and so on. So only list. Till now we were using element. So what we used to do, element only we have to take, and here in append element, only one element. But when it is a record, that time you will use this second list. So it is nested. Now let us see how it is getting executed. Okay, now when I am executing push, pop, display, exit. So one I will select here, one, and it will ask for roll number. Suppose roll number is 1, name is, suppose name I am giving, marks I am giving. Now again enter your choice. It is showing only one record. Again if I give 1, then the second student record, 2 it is asked 2, and then marks it is asking. So you can see now 2 records it is showing, and if you give pop here, the last one whichever is entered will be deleted. So I am giving here pop, and you can see it is showing here. Now student record deleted will be the last one, not the element. So there is a small correction I will make it, that deleted record is this. You can see the last one, because in stack LIFO implementation is there, last in first out, and after deletion you are having the other records. Only one record, the last one, will be deleted. Again you can add a new
record, and display will show now only one record is there, so it will show only one record. So only one record it is showing. So this is your question. As in practical board exam, term 2 board exam also, you will get such questions that student records or flight records or inventory or product. Now the column names, attributes, if it is given, then that you will take, you will add in a list, you will append in a stack. Over. Pop will be same for any question, pop will remain same. Only here I have written element deleted, but it should, because it was a student, so now I will write here student deleted is D. And after deletion it remains same. So this is same. Yes, name of the stack I have given here stack. If in the question they have given some other name like stack wow, like the question paper which I have shared with you, stack wow it was written. So here also stack wow you will write. Rest all will be same. Clear? हेलो बच्चों, स्टैक का एक क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल में भी आएगा और थ्योरी पेपर में भी आएगा, तो उसके लिए हम स्टैक को थोड़ा और इजी कर लेते हैं ताकि हमको स्टैक में फुल मार्क्स मिल जाए। तो स्टैक क्या होता है? जब हम एक के ऊपर एक कोई सामान को रखते हैं, तो इस केस में जब हमको सामान को निकालना पड़ता है तो जो लास्ट में रखा जाता है उसी सामान को हम पहले निकाल सकते हैं। तो इसमें लीफो बोलते हैं, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रैटेजी यूज़ होता है, जिसमें हम इसमें स्टैक ऑफ बुक्स भी देख सकते हैं, स्टैक ऑफ चेयर्स भी देख सकते हैं, जैसे ये स्टैक ऑफ चेयर्स है, स्टैक ऑफ प्लेट्स है। तो इन केसेस में जो लास्ट में रखा जाता है वही पहले पॉप आउट होता है। तो हम इसमें जब डालेंगे पुश, इसमें 3 ऑपरेशंस है, पुश पॉप एंड डिस्प्ले। तो पुश करते समय हम क्या करेंगे, जो लास्ट ऊपर से या लिस्ट बनाएंगे हम जब, तब लास्ट से ही अपेंड होगा, और पॉप करते समय लास्ट वाले को ही हम पॉप कर सकते हैं, और डिस्प्ले करते समय हम पूरे स्टैक को डिस्प्ले कर देंगे। तो इसके प्रोग्राम्स हमारे पास ऑलरेडी, हमने एक बार प्रोग्राम को देख लेते हैं। प्रोग्राम में हमारे पास जो प्रोग्राम्स है उसमें हमको पुश करने के लिए एक एलिमेंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा है डेफ पुश, फिर उसका ब्लॉक बनाया है। तो एक एलिमेंट हम लेंगे यूज़र से, एंटर एन एलिमेंट टू पुश, उसके बाद हम उसको अपेंड कर देंगे। तो ये जो पोर्शन है ये इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक यूज़र से हमने एलिमेंट ले लिया, इंट इनपुट एंटर एन एलिमेंट टू पुश, और स्टैक डॉट अपेंड। ये जो अपेंड लाइन ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हमने आफ्टर पुश एक आउटपुट का भी लिख लिया है। आउटपुट हमने चेक किया, अगर लेन ऑफ स्टैक 0 है तो एम्प्टी स्टैक दिखा रहा है, एल्स वो स्टैक, जैसे लिस्ट को हम यूज़ करते हैं पूरा वैसे ही, एल्स वो स्टैक को दिखा रहा है। तो ये हमारा पुश का प्रोग्राम हो गया। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टैक डॉट अपेंड। अगर क्वेश्चन पेपर में स्टैक की जगह कोई दूसरा नाम दिया है तो हम उसी नाम को लिखेंगे, लेकिन फंक्शन हमारा अपेंड ही रहेगा। और जिस एलिमेंट को डालने बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक एलिमेंट डाला है, अगर हमको पूरा बच्चे के स्टूडेंट डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा तो हम एक लिस्ट बनाएंगे, या यूज़र से हम इवैल करके एंटर द स्टूडेंट डिटेल्स लेकर फिर उसको हम यहाँ पे डालेंगे। तो उसके प्रोग्राम्स को हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट डाल रहे हैं, तो उसके लिए हमने अपेंड करके डाला। अब आप पॉप का प्रोग्राम देखिए। पॉप के प्रोग्राम में हमने चेक किया, अगर हमारा स्टैक 0, लेंथ ऑफ स्टैक 0 है, उसका मतलब हमारे स्टैक में अभी तक एलिमेंट नहीं डला है, तो प्रिंट अंडरफ्लो और द स्टैक इज एम्प्टी। यहाँ पे हम दूसरा कोई भी वो लिख सकते हैं, और the stack is empty, so stack is empty. Next, else. अब हमको पॉप करना है, मतलब डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हमने यहाँ पे 2 मेथड यूज़ किया है। एक मेथड हमने यहाँ पे पॉप ऑफ l-1, मतलब लास्ट एलिमेंट l-1, और सेकेंड मेथड जो हम लोग नॉर्मली क्लास में यूज़ करते हैं उसमें पॉप के ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमेशा लास्ट एलिमेंट। जैसे ये जो सारे क्वेश्चंस, बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं, आप इसके आंसर्स को एक बार देख लीजिए। तो बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको दिख रहा है कैसे आंसर को लिखना है।
तो ये पुराने क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें हमको डेफ अगर ये दिया हुआ है मेक पुश फंक्शन का नाम, और पैकेज स्टैक की जगह पैकेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या डालना है पैकेज में वो हमने यूज़र से ले लिया और पैकेज डॉट अपेंड करके वो हमने डाल दिया, ए करके डाल दिया। तो ये हमारा अपेंड वाला और पुश का प्रोग्राम हो गया। पॉप के प्रोग्राम में हमको क्या करना है, ये हमारा पुश का प्रोग्राम है। पॉप के प्रोग्राम में हमको कुछ भी नहीं करना है, खाली क्वेश्चन पेपर में मेक पॉप दिया हुआ है, पैकेज दिया हुआ है। पैकेज अगर पैकेज हमारा एम्प्टी है तो एम्प्टी स्टैक हो जाएगा, या फिर हमको पैकेज डॉट पॉप, ये मेन है, पैकेज डॉट पॉप। डायरेक्ट पॉप लिखने से वो लास्ट एलिमेंट को डिलीट कर देता है। तो ये एक प्रोग्राम हो गया। सेकेंड प्रोग्राम यहाँ पे स्टूडेंट का है। अब इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि पूरा स्टूडेंट का डाटा, रोल नंबर, नेम, क्लास, इसको हमने एक लिस्ट में डाला है यहाँ पे इन्फो करके, और उसके बाद स्टू जो हमारा स्टैक का नाम है वो स्टू है, तो स्टैक में हमने अपेंड कर दिया इन्फो को। तो अगर हमको एक एलिमेंट डालने बोलेंगे तो हम ऐसे करके एक एलिमेंट डालेंगे, वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। और अगर पूरे लिस्ट को डालने बोलेंगे तो हम पहले लिस्ट को बना लेंगे, और लिस्ट को बनाने के बाद हम अपेंड करके ब्रैकेट में हम लिस्ट को डाल देंगे, तो ये लिस्ट उसमें ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा। वैसे ही पॉप करने के लिए, डिलीट करने के लिए हमको स्टैक का नाम लिखना है जो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, और डॉट पॉप। तो ये बहुत इजी है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा, और प्रैक्टिकल में आपके ये क्वेश्चंस आएंगे। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप मेनू ड्रिवन बना लीजिए। तो मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे आपको स्टैक का प्रोग्राम दिख रहा है, हमने पुश के लिए प्रोग्राम लिखा, पॉप के लिए प्रोग्राम लिखा, डिस्प्ले, और ये हमने मेनू डाल दिया है। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो ये सबसे पहले मेनू दिखाएगा। फिर हमने 1 पुश के लिए लिखा, सपोज हमने इसमें इवन नंबर्स को डालने हैं, तो हमने पहला नंबर 2 डाला, उसके बाद ये डल चुका है 2, फिर से मेनू आ गया। फिर हम 1 सिलेक्ट करके पुश करते हैं, इसमें सेकंड नंबर हम 4 डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और 4 आपको दिख रहा है, आ गया है। नेक्स्ट फिर से अगर हम 1 डालेंगे तो फिर से पुश करने के लिए, तो यहाँ पे हमने 6 डाल दिया, तो ये 2 4 6 आ गया। अब जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो 2 4 6 डिस्प्ले होगा, लेकिन जब हम पॉप करेंगे, 2 डालेंगे, तो लास्ट एलिमेंट जो हमने पुश किया 6 को, वो डिलीट होगा। तो अब मैं जब एंटर करूंगी तो 6 डिलीट हो जाएगा, 6 इज डिलीटेड, और हमारा 2 और 4 बचेगा। तो ये मेन है स्टैक का। स्टैक का ऑलरेडी हम देखे हैं कि जो लास्ट में हमारा इनपुट होता है वही पॉप आउट होता है। तो ये स्टैक है। क्यू जो होता है, क्यू में हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। जब हम लाइन में खड़े होते हैं तब क्यू में खड़े होते हैं, तो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है जो फर्स्ट क्यू में होता है। तो इसके लिए हम इसको 0 जो इंडेक्स पोजीशन है, हमने अभी जो प्रोग्राम्स देखे थे उन प्रोग्राम्स में हमने कुछ भी नहीं लिखा था, तो बाय डिफ़ॉल्ट पॉप में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है, लास्ट एलिमेंट डिलीट हो रहा है। अगर पॉप के यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट में हम 0 डाल देंगे तो फिर फर्स्ट एलिमेंट डिलीट होगा। तो क्यू में फर्स्ट एलिमेंट डिलीट होता है। तो क्यू अभी सिलेबस से डिलीट हो गया है, इसलिए क्यू को खाली हम ठीक है एक बार देख लेंगे। अपेंड तो क्यू में सेम यही मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है, खाली पॉप के यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है। तो ये हमारे बोर्ड के पिछले साल के क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इसको आप देख लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, आप अभी पॉज करके क्वेश्चन को लिख के पहले आंसर को लिख लीजिए। उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है, खाली हमको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी यूज़र से लेना है, एक लिस्ट क्रिएट करना है या टपल क्रिएट करना है और उसमें अपेंड कर देना है। क्वेश्चन पेपर में अगर दिया रहेगा कि टपल क्रिएट करके फिर डालना है, तो आप एक टपल क्रिएट
क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप डालेंगे। अगर क्वेश्चन पेपर में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो आप लिस्ट भी क्रिएट करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर टपल क्रिएट करना है तो राउंड ब्रैकेट में डालना पड़ेगा, और अगर लिस्ट क्रिएट करना है तो फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। बाकी पॉप का प्रोग्राम आपका सेम रहेगा, चाहे वो टपल हो चाहे वो लिस्ट हो, पॉप का प्रोग्राम हमारा सेम रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को आपको खाली एक बार पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हैं, इसको आप सॉल्व करके अगर इसमें डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट वीडियोस जो आपके कोई भी डाउट्स अगर हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हमारा टारगेट है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमको फुल मार्क्स मिले। तो उसके लिए हमको जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, या कोई भी टॉपिक समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप काइंडली इसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिए कि ये टॉपिक और अच्छे से करना है, तो हम फिर उसको और डिस्कस करेंगे। तो आप इन प्रोग्राम्स को पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए। ये बेस्ट प्रोग्राम है। फर्स्ट वाला फॉर सिंगल एलिमेंट, सेकेंड वाला फॉर लिस्ट ऑफ एलिमेंट या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, थर्ड वाला जो है वो टपल के फॉर्म में डाला गया है, एंड लास्ट वाले में हमने सिंपली इनपुट लेकर हमने डायरेक्टली उसको, तो हम इसमें लिस्ट टपल डिक्शनरी किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टैक का पोर्शन है, और एक साथ मेनू ड्रिवन के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये मेनू हमने बना के रखा है। इसको जब हम रन कराएंगे, तो यहाँ पे एंटर योर चॉइस, तो ये सपोज हमने 1 डाला है तो एंटर एन एलिमेंट टू पुश। सपोज ऑड नंबर्स हमको डालने हैं तो ऑड नंबर्स या फिर 2 डिजिट ऑड नंबर्स डालने हैं सपोज, तो यहाँ पे स्टैक में 11 आ गया, फिर से 1 डालेंगे तो पुश होगा। सेकेंड ऑड नंबर 13 आ गया, फिर से 1 डालेंगे पुश। थर्ड ऑड नंबर अब पॉप करेंगे तो 15 लास्ट में डला है तो 15 पॉप आउट होगा। तो यहाँ पे दिखा दिया इसने कि 15 इज डिलीटेड, स्टैक इज 11 एंड 13। सो दिस इज योर कंप्लीट मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपके प्रैक्टिकल में तो आएगा ही, प्लस आपके थ्योरी में भी आएगा। तो ये अपेंड, खाली इसमें अपेंड करना है। हाँ, इसको आप 2 मेथड से कर सकते हैं, L-1 मेथड से भी कर सकते हैं, और हमने अभी जैसे यहाँ पे डायरेक्टली पॉप 0 करके किया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो पॉप करके कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये स्टैक में होगा, और 0 लिखेंगे तो ये क्यूब में होगा। तो पॉप करके हम खाली छोड़ देंगे, तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं। बाकी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें अगर आपको स्टूडेंट डिटेल्स डालने के लिए बोला जाएगा तो आप स्टूडेंट के डिटेल्स को यूज़र से लेकर उसको एक लिस्ट बना के आप यहाँ पे एलिमेंट की जगह पे उस स्टूडेंट के डेटा को, पूरे डेटा को, रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, टोटल परसेंटेज, जो भी डेटा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लिस्ट बना के आप डाल सकते हैं। तो ये हमारा स्टैक का प्रोग्राम हो गया है। आप एक बार देख लीजिए। अगर हम और इजी करना चाहें तो इसको हम और इजी मेथड से हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज हमको स्टूडेंट डेटा यूज़र से लेके या फिर कोई इन्वेंट्री डालना है या एयरवेज लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेफ हमने एक पुश लिखा है और उसमें हमको यूज़र से लेना है तो डायरेक्टली हम इवैल करके ले सकते हैं, या फिर मैं अभी स्टूडेंट का ले रही हूँ तो रोल नंबर इक्वल्स टू, रोल नंबर एक इंटीजर है तो इंट इनपुट, एंटर द रोल नंबर, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नेम। ऐसे ही सारे डेटास हमको यूज़र से ले लेने हैं। नेम के लिए इनपुट लिखेंगे, एंटर नेम, और मार्क्स भी अगर डिस्प्ले कराने हैं तो फिर हम उसमें मार्क्स भी डाल देंगे। यहाँ पे एंटर मार्क्स या टोटल, सपोज एक सब्जेक्ट का मार्क्स हम लोग बना रहे हैं और उसमें फ्लोट ले रहे हैं तो फ्लोट डेसिमल में आ जाएगा
इनपुट, एंटर मार्क्स। नेक्स्ट हमको एक लिस्ट बनाना है, तो हमने स्टूडेंट के लिए यहाँ पे स्टूडेंट डेटा है, तो हमने लिस्ट में क्या क्या डाल लिया है, रोल नंबर हमारे पास है, नेम है और मार्क्स है। अब इसको हमको किस में डालना है, एक स्टैक में डालना है, तो हमने यहाँ पे स्टैक डॉट अपेंड किया है। हम इस स्टैक को यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, तो स्टैक को मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर कर लिया है, स्टैक इक्वल्स टू एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आके मैंने स्टैक में डॉट अपेंड करके मैंने वैल्यूज़ को डाल लिया। वैल्यू कहाँ पे है, टू लिस्ट में है। अब इसके बाद हमको यहाँ पे आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट दिखाने के लिए हम डायरेक्ट प्रिंट कमांड से हम आउटपुट दिखा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज़ किया और डायरेक्टली हमने पूरे स्टैक को डिस्प्ले करा दिया। पूरा स्टैक जो है वो डिस्प्ले हो गया। ये हो गया हमारा पुश का प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारा है पॉप का प्रोग्राम। पॉप में हमको कुछ भी नहीं करना है, खाली चेक कर लेना है पहले कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है, स्टैक को चेक कर लेते हैं। अगर एम्प्टी है तो वो स्टैक इज एम्प्टी प्रिंट कर देगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो स्टैक इज एम्प्टी। एल्स अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमको सिंपली डिस्प्ले कराना है। पॉप करके डिस्प्ले कराना है, तो हम डॉट पॉप करके भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली पॉप करके डिस्प्ले कराएं तो आफ्टर पॉप द स्टैक इज, सो ये द स्टैक डॉट पॉप, कौन सा एलिमेंट पॉप आउट हो रहा है वो डिस्प्ले हो गया, और उसके बाद पॉप होने के बाद स्टैक भी डिस्प्ले हो गया। ये सबसे इजी मेथड हो गया। बस अब मेनू ड्रिवन बनाना है हमको, तो मेनू में हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा, मेन प्रोग्राम, तो हैश मेन। मेनू ड्रिवन ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं। मेनू ड्रिवन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, तो पुश पॉप डायरेक्टली हम यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ से डायरेक्टली ले रहे हैं। खाली पॉप तक हमको चाहिए, तो वाइल से लेकर खाली पॉप तक चाहिए। तो हमने मेन में यहाँ पे इसमें हमको डिस्प्ले नहीं कराना है, खाली हमको पॉप तक चाहिए, तो हमने खाली पॉप तक लिखा है। एग्जिट के लिए हम अभी मेनू नहीं रख रहे हैं। तो पुश एंड पॉप, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी पेपर में खाली पुश एंड पॉप आएगा, इसीलिए हमने खाली यहाँ पे स्मॉल लेटर में पुश है, स्मॉल लेटर में पॉप है, तो यहाँ पे भी हमको स्मॉल लेटर में पुश और स्मॉल लेटर में पॉप है। नाउ नेक्स्ट इसको हम रन करा देते हैं। तो ये हमारा स्टैक का प्रोग्राम है, स्टैक टू सेव। अब हमारा मेनू आ गया यहाँ पे पुश और पॉप। जब हमने यहाँ पे एंटर योर चॉइस 1 डाला, तो एंटर रोल नंबर 1 डाला, नेम सपोज कोई भी एक नाम डाल देते हैं इसमें, रिया। नेक्स्ट मार्क्स 99। तो आपको ये दिखा कि ये लिस्ट यहाँ पे 1 रिया 99 पुश हो गया है। फिर से अगर 2 पुश करेंगे और फिर से हम डालेंगे इसमें
enter your choice, पॉप में डिलीट हो गया, सॉरी 1 डालना था तो फिर से हम डाल लेते हैं। 1 में रोल नंबर 1, नेम रिया एंड मार्क्स इज 99, तो ये एक एलिमेंट डल गया। फिर से 1 करेंगे हम इसमें। रोल नंबर 2, कोई छोटा नाम ले लेते हैं और इसका मार्क्स डाल देते हैं, तो ये हो गया सेकंड। अब थर्ड डालेंगे जब, तब इसमें थर्ड चॉइस में 1 ही डालना है पुश के लिए। रोल नंबर 3 डालना है और इसमें एक नाम ले लेना है हमको और मार्क्स डाल देने हैं इसमें। तो ये आ गया 3 हमारे स्टूडेंट्स के डिटेल आ गए। अब हम 2 करेंगे तो लास्ट में जो डला है नेहा का डिटेल, ये खाली पॉप हो गया। तो यहाँ पे आपको दिखा कि खाली नेहा का डिटेल पॉप होके लिस्ट में खाली 1 रोल नंबर और 2 रोल नंबर बच गया है। नेक्स्ट हम इसमें फिर से पुश करेंगे तो फिर वो खाली फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट के साथ न्यू एक थर्ड एलिमेंट वो लेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। दिस इज द बेस्ट मेथड जो अभी हमने किया है, ये बेस्ट वाला प्रोग्राम है। इसको आप एक जगह लिख लीजिए। ये जो सेकंड वाला प्रोग्राम है इसको आप लिख लीजिए। ये वाला प्रोग्राम बेस्ट है, सबसे छोटा है, बस यहाँ से शुरू होके बस यहाँ पॉप तक है और खाली ये पूरा काम भी कर रहा है। तो ये कॉपी में आप लिख लीजिए। ये स्टूडेंट डिटेल्स के लिए आया है। अगर एयरवेज आ जाएगा तो यहाँ पे खाली रोल के जगह फ्लाइट नंबर, फ्लाइट नेम और फेयर आ जाएगा। अगर इन्वेंट्री के लिए आ जाएगा तो रोल के जगह पे आइटम नंबर, आइटम नेम और मार्क्स के जगह पे प्राइस आ जाएगा। बाकी पॉप का प्रोग्राम किसी भी डोमेन में सेम रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे हमको डिलीट करने के लिए जस्ट हमने जहाँ डिलीट किया है तो यहाँ पे थोड़ा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ा डिलीटेड एलिमेंट इज डिलीटेड एलिमेंट या स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट रोल डिटेल्स था तो डिलीटेड इज करके हम दिखा दे रहे हैं कि कौन सा डिलीट हो रहा है। और उसके बाद फाइनल स्टूडेंट लिस्ट जो था वो स्टैक करके डिस्प्ले कर रहा है आफ्टर डिलीशन। आफ्टर डिलीशन स्टैक इज after deletion stack is, ये यूज़र फ्रेंडली हो गया। अब जब हम इसको रन कराएंगे तो वो इस मैसेज के साथ वो दिखाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे अभी रन कराया, जब हमने रन कराया तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया है। अब इसमें हमने अगर पुश किया तो उन्होंने पूछा रोल नंबर 1, कोई भी नाम डाल दिया हमने, मार्क्स डाल दिया। ऐसे ही हमने फिर से पुश किया तो रोल नंबर 2 के लिए कोई भी नाम और मार्क्स आ गया। अब जब हम पॉप कराएंगे तो जो लास्ट वाला है 2 वाला रोल नंबर ये पॉप होगा। तो यहाँ पे डिलीटेड इज दिस एंड आफ्टर डिलीशन द स्टैक इज दिस। सो आई थिंक नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसको नोट कर लीजिए आप, पुश का प्रोग्राम और पॉप का प्रोग्राम। इसको और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं। वो सिंगल लाइन है, खाली प्रिंट करके स्टैक हो जाएगा। तो इसमें जो नाम दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में, स्टैक का नाम अगर स्टूडेंट दिया रहेगा, बुक दिया रहेगा, रेलवे दिया रहेगा, आपको वही नाम लिखना है, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो मुझे आशा है ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। स्टैक क्यू जो है वो पूरा प्रोग्राम सेम है, खाली यहाँ पे हमने क्यू लिख लिया है और पॉप में खाली इसके आर्ग्यूमेंट में 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्यू डॉट पॉप में 0 आ जाएगा। क्यू तो डिलीटेड में आ गया है सिलेबस में तो वो आएगा नहीं, इसलिए खाली आप स्टैक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। So this is from your NCERT book, chapter 3, stack. Now stack, from the word itself you will understand what is stack.
Suppose in a box you are keeping some books, one above the other. Now, when I will ask you to take out any book, you have to take out from the top only. So it is a stack of books, stack of plates, where you cannot take out any book from in between or from down. So from top only, so we will learn two functions now. One is push, that is insert an element at the top or at the end of the list, and using append method we will add it, and pop we will use to remove the last element. So in stack we have to remember one thing, only the last element will be popped out. You cannot pop any element from in between. Like in list, I was asking you to remove any element from in between. Suppose a class full of students. Now, if I ask you that this student has taken the TC, you remove it. So what you will do in list, you will use remove method or pop method, and you will remove that particular student who has taken TC. But in stack, it is not like that. Stack means last in, first out. LIFO we will learn. So let's see what's given in our NCERT book. We are going to be able to ask our computers to monitor things for us. And when certain conditions happen, are triggered, the computers will take certain actions and inform us after the fact. So this quotation is given here. Now in this chapter we will learn stack, operations on stack, implementation of stack in Python, notation for arithmetic expressions, conversion from infix to postfix notation, evaluation of postfix expression. So this is your syllabus for stack. Now we will do the introduction. We have learned about different data types in Python for handling values in class 11. Recall that string, list, set, tuple, etc. are the sequence data types that can be used to represent collection of elements either of the same type or different types. Multiple data elements are grouped in a particular way for faster accessibility and efficient storage of data. That is why we have used different data types in Python for storing data values. Such grouping is referred as a data structure. So you are learning about the data structure, that is a particular, suppose all the names are grouped together, all the marks are grouped together. Now it is very easy for us to access or do some calculation. Suppose names are there, so we know that I cannot do any mathematical calculation on the names. A data structure defines a mechanism to store, organize, and access data along with operations, processing that can be efficiently performed on the data. For example, string is a data structure containing a sequence of elements where each element is a character. On the other hand, list is a sequence data structure in which each element may be of different types. We can apply different operations like reversal, slicing, counting of elements, etc. on list and string. Hence, a data structure organizes multiple elements in a way so that certain operations on each element as well as the collective data unit could be performed easily. So last year already you have done all this thing, list and string, where all the different type of operations also you have done on list and string. Like in string you used to find out the words which are starting with A, or suppose you used to count how many this or how many those are there. But in list, what type of work you used to do? Suppose a list of numbers, prime numbers, which are the prime numbers, which are the composite numbers. So different set of tasks we are doing on those data structures. Stack and queue are two other popular data structures used in programming. So it is a data structure. Although not directly available in Python, it is important to learn these concepts as they are extensively used in a number of programming languages. Now in Python you will not get it directly, so we will use list and
we will use the LIFO and FIFO. We will apply those in your list. In this chapter, we will study about stack, its implementation using Python as well as its application. Now, what is a stack? We have seen piles of books in a library or stack of plates at home. To put another book or another plate in such a pile, we always add to the pile, the object at the top only. So this you have to be careful that when you will be asked to add, you have to add the object at the top only. Likewise, to remove a book or a plate from such a pile, we always remove or delete from the pile the object from the top only. So when you are asked to remove any plate or book, you will remove from the top only. This is because in a large pile, it is inconvenient to add or remove an object from in between or bottom. Suppose the pile is means in a large pile, in between if you take out a book, then all will fall. So it is not possible. Such an arrangement of elements in a linear order is called a stack. Clear? We add new elements or remove existing elements from the same end, commonly referred to as the top of the stack. It thus follows the last in, first out. So in difference between stack and queue, this is one of your difference. In this you will write LIFO and there it is FIFO. When you stand in a queue, it is first in, first out, so FIFO. So LIFO principle, that is the element which was inserted last, the most recent element will be the first one to be taken out from the stack. So here you can see the example. Any other example you can give from your side? This is a stack of book. This is a stack of plates. Anyone who can give any other example? Suppose a box containing the tennis balls. Now if you want to take out the ball, it is a box covered from all the side, only one opening is there. So from there you can take out the last ball which you have kept inside. Clear? Now application of stack, where we will use stack. Some of the applications of stack in real life are pile of clothes in an almirah, multiple chairs in a vertical pile. In computer lab, all the chairs were kept one above the other, so you can take out only the last one, which is, it is a very good example, you have already done it. While keeping the chairs, we used to keep from the last one, we used to keep at the top. While taking out, it is not possible to take out any chair from in between because the design is such, they get clamped in it. So you have to take out the last one which you have kept first. Bangles worn on a wrist, yes, very good example. So when you are wearing the bangles, the last one which you are putting in will be popped out first, taken out first. Pile of boxes of eatables in pantry or on a kitchen shelf. Suppose boxes one above the other you have kept in kitchen shelf or in pantry. So there also you do the same thing. Some examples of application of stack in programming are as follows. When we need to reverse a string, the string is traversed from the last character till the first character. That is, characters are traversed in the reverse order of their appearance in the string. This is very easily done by putting the characters of a string in a stack. We use text image editor for editing the text image, where we have options to redo, undo the editing done. When we click on the redo, undo icon, the most recent editing is redone or undone. So this also you might have seen, when you do any task and you want to redo or undo, the last one will be redone or undone, and so on. In this scenario, the system uses a stack to keep track of changes made. So whatever changes you are making, the system, your computer is keeping the stack of it, and when you undo it, the last one which you have done will be redone or undone.
While browsing the web, we move from one web page to another by accessing links between them. In order to go back to the last visited web page, we may use the back button on the browser. Let us say we accessed a web page P1 from where we moved to web page P2 followed by browsing of web page P3. Currently, we are on web page P3 and want to revisit web page P1. We may go to a previously visited web page by using the back button of the browser. On clicking the back button once, we are taken from web page P3 to web page P2. Another click on back shows web page P1. In this case, the history of browsed pages is maintained as stack. So many examples they have given you. If you are asked with the examples, you can give this example. So while browsing, when we press the back button, directly we cannot go to the first web page. Suppose P1, P2, P3, three web pages we have opened serially. Now from P3, if you press the back button, you will go to P2, and then again if you press the back button, then you go to P1. Now here this think and reflect, I am reading it. The operating system in computer or mobile allocates memory to different applications for their execution. How does an operating system keep track of the free memory that can be allocated among programs, applications to be executed? So here also you can see one example is given. Next is, while writing any arithmetic expression in a program, we may use parentheses or order the evaluation of operators. While executing the program, the compiler checks for matched parentheses. That is, each opening parenthesis should have a corresponding closing parenthesis, and the pairs of parentheses are properly nested. In case of parentheses are mismatched, the compiler needs to throw an error. To handle matching of parentheses, stack is used. Clear? So how many you are opening, that many closed parentheses should be there. So for matching this, stack is used. So many examples of stack you have got. Now operations on stack. As explained in the previous section, a stack is a mechanism that implements LIFO arrangement. Hence, elements are added and deleted from the stack at one end only. So this you have to remember. From one end only you can insert an element or take out or remove an element. The end from which elements are added or deleted is called top of the stack. So we will refer now. Suppose stack, I will use a list of, means stack will be in the form of list only, and the last one, the name I will give is top. Two fundamental operations performed on the stack are push and pop. In this section, we will learn about them and implement them using Python. So push is to insert and pop is to delete. So push and pop operations. Push adds a new element at the top of the stack. So this is very important. This only you have to do. It will push. What is the function of push? To add a new element at the top of the stack. It is an insertion operation. We can add elements to a stack until it is full. A stack is full when no more elements can be added to it. Trying to add an element to a full stack results in an exception called overflow. Suppose the stack is full and we want to add more elements, it will show overflow. That is, the stack is full. Pop operation is used to remove the topmost element of the stack. That is, the element at the top of the stack. It is a delete operation. We can delete elements from a stack until it is empty. So one by one you can keep on deleting or popping, and at the end it will show it is underflow. There is no element in it. Trying to delete an element from an empty stack results in an exception called underflow. Suppose you are asked to remove an element and the stack is empty, so it will print underflow or it will raise an exception underflow. A stack is used to insert and delete elements in LIFO order.
Same principle is followed in adding and removing glasses from a pile of glasses. Let us create a stack of glasses assuming that each glass is numbered. Now here you can see we are putting numbers on glass and we are adding the glass. So first it is an empty stack, then we have kept glass 1, then glass 2, and if you are asked to pop, then which glass will be popped? 2 glass, number 2 glass will be popped. Again you are asked to push, so 3 will be pushed. Again 4, you have been given the 4th glass. Again you are asked to pop, so the last one, 4th, will be popped. Then 3 will be popped, then 1 glass number will be popped, and finally it is empty, so it will raise an exception underflow. A stack is used to insert and delete elements in LIFO order. Same principle is followed in adding and removing glasses from a pile of glasses. Let us create a stack of glasses assuming that each glass is numbered. Visual representations of push and pop operations on a stack of glasses are shown in figure 3.2. So visually now you can remember it, how it is functioning. Implementation of stack in Python. Now in Python, how you will use it, this we will learn. We have learned so far that a stack is a linear and ordered collection of elements. The simple way to implement a stack in Python is using the data type list. We can fix either of the sides of the list as top to insert or remove elements. It is to be noted that we are using built-in methods append and pop. Now this is very important. We will use append and pop of the list for implementation of the stack. As these built-in methods insert and delete elements at the rightmost end of the list. So first when you will use append, it will add at the last, that is at the end, and pop nothing. If you give, by default it is the last element will be popped out. Hence explicit declaration of top is not required. So we will not use any variable called top. Directly we will write here only append and the value and pop. So pop will delete the last element. Let us write a program to create a stack of classes as given. So here a algorithm is given. Insert, delete elements or glasses. Check if the stack is empty, no glasses in the stack. Find the number of elements, glasses in the stack. Read the value of the topmost element number on the topmost glass in the stack. The program shall define the following functions to perform these operations. Let us create an empty stack called glass stack. So we have given a name as glass stack. You can give any name. We will do so by assigning an empty list to the identifier named glass stack. So here an empty list is created. You can see a function named is empty is to check whether the glass stack is empty or not. Last year we have used this is empty function to check whether it is empty or not. Remember, trying to remove an element from an empty stack would result in underflow. So it will give an error message. So better to check at the beginning and do our task afterwards. This function returns true if the stack is empty, else returns false. So is empty we will use to check whether it is empty or not. If it is empty, then it will tell that it is empty, so cannot delete an element. Otherwise, while deleting, it will give an error message. So here you can see def is empty is a function, and in that glass stack the list we have passed. If len of this is 0, then it will return true, else it will return false. A function named oppush to push a new element in stack. This function has two parameters: the name of the stack in which the element is to be inserted, glass stack, and the element that needs to be inserted. So two elements you require, where that is the name of the stack and which element
have to insert. We know that insertion of an element is always done at the top of the stack. Hence, we shall use the built-in method append of list to add an element to the stack that always adds at the end of the list. As there is no limit on the size of list in Python, the implemented stack will never be full unless there is no more space available in memory. So in books, some of the books, some typological mistake is there where they are checking the stack is full or not and showing this message overflow. But in Python, what is happening in list, there is no such case where the list will be full. So we will not face this overflow error. So we will not use in our program also. We will not check whether it is full or not. Yes, while deleting, if it is empty underflow, that we will check whether the list is empty or not. But while appending, we will never check whether it is full or not. Simply one line, name of the list dot append and the new element which is to be appended. So only one line command you have to remember. A function named size to read the number of elements in the glass stack. We will use the len function of list in Python to find the number of elements in the glass stack. So if you are asked to return the length or the number of elements in a stack, simply you will use this len and the name of the stack in bracket. Like list, it is functioning. You used to use list, here you are using stack name. A function named top to read the most recent element. So the last element, if it is asked, or most recent element, what you will do? Def top. Now this is a function you are writing. If is empty, if it is empty, then it will return none. Stack is empty. Else x equals to len of the stack, element equals to glass stack x of -1. So whatever is the length, the last element of a list is always len of list -1. So here x is the len of stack, -1 is the position. This is one method. Second method, you already last year you have done last element. How you used to access of list directly without length? Anybody? Last element of the list. Only list, -1 if you used to write reverse indexing. -1 used to return the last element of the list. You have forgotten all the things of last year. A function named oppop to delete the topmost element from the stack. It takes one parameter, the name of the stack from which element is to be deleted, and returns the value of the deleted element. The function first checks whether the stack is empty or not. If it is not empty, it removes the topmost element from it. We shall use the built-in method pop of Python list that removes the element from the end of the list. So here what we will do, simply one pop function we will use and we will remove from the end of the list. Okay, before that we will check whether the list is empty or not. So this is completely with that one example only they have. I will show you now just menu driven program I will create and I will show you. Suppose in a class or suppose in a tunnel, the students are given an activity where they have to enter the tunnel which is open at, or a cave, tunnel shaped cave where it is opened at one end. So the list of all the students and how it is to be done, that I will show you. So a function named display to show the contents of the stack. So only print name of the list or name of the stack will display all. Or if you want to use a for loop from last to first, then you can use, because normally if you use print the name of the list, it will show from first to last. But in stack, if you want to show from last to first, then we will use a for loop. We will execute it from the last element to the first element, reverse we will do, and you can display the list
one by one element, one by one of the stack. Once we define the above functions, we can use the following Python code to implement a stack of classes. Now you can see the full program. First is the empty list is created, then we have added elements to the stack. So we are pushing elements in that print, pushing elements in it, and then one by one elements, you can see element glass 1 and then glass 2. Then if you want to display, then you can display the size, display the stack. Then if you want to remove, you are using here pop to remove any particular, here the last one, if you want to remove, then pop empty parenthesis, we will use it. I will run and I will show you with some other example, not of this class one. I am simply showing what is given in NCERT book. Delete all elements of the stack. If you want to delete all the elements of the stack, then directly the clear option is given, or one by one, while you can use and you can delete all. One by one, all you can delete, so that it will be empty. Yes, so these were your programs. Now notations for arithmetic expression. Now here the prefix, postfix and infix is given to you. So this we will do in our next class. First let me show you the programs of stack. Now which example you want to take of stack? Anybody? Suppose books you want to take. So stack of books I am taking here. So the name I have comment I am writing here, stack of books. And then in this I want to give a name, book equals to, so this is a stack of book. Now I want to create a menu driven program. So I will give here push function I will write, and then in push simply you have to write here the element you will take, the new book name you will take from the user, new book name you will take from the user, input new book name, enter, and this you have to append in it. So for appending, what is the code? Book dot append, and the new book name will be appended. So the element you have to write, only this much is the answer. Next is your pop. In pop you have to check whether it is empty or not, sorry. So for that, if your list is empty, it will show a message under flow. So print, it will show the message under flow, and it will come out and it will break, else it will print the book. So while printing, you can print in reverse order also, or you can simply print the list. So this is the name of the list. Okay, sorry, we were popping here. So first let us print which one the last element will be popped, and book dot pop, so the last element it will print. You can do one thing, you can keep the element in a string. So b1 you can take, you can keep the element in b1, and you can print the element deleted is this. So print the book removed or deleted book is, deleted book is, now you are showing the name of the book is in b1, and then after deletion, if you want to show the book details, you will write here print book.
So this is after deletion you are showing. Here also after addition, if you want to show, you can show it. Now next is to display. So display function, same as above you have written. That is, if it is empty, it will show underflow. Otherwise, it will display the books, display the list. So what I have done is, if it is empty, it will show underflow. This I don't require. So this is over. So only this much I am showing it. So this is over. Now my main program I will call main program. I am calling it. So menu driven, you all know how to write the menu driven program. While true, this you have to write in your practical copy also. So the program which I have just now written, I will share with you. You will note it down nicely in your copies, because these programs you will not get in your books. Now menu you are displaying. Sorry. Now in this menu, one for I'm copying it from here. Now 2 for pop, 3 to display, and 4 to exit. So now we will call the functions which we have written above. So choice we will take from user. Int input, enter your choice. Now you will ask the user, if choice equals to 1, then you will call the function which you have written. First function was push, then if choice equals to 2, then the second function was pop, and if choice equals to 3, then the third function was display, and the last one exit. So what I am doing is, in exit I will break. So if choice equals to 4, before breaking I am printing a statement, have a nice day or thank you. Just to show that it is getting executed, and then it will break. Now you execute it. Now you can see here it is getting executed. Menu is being displayed. So 1, enter a new book. Suppose the new book is my English book. Now again they are asking the menu. Again I want to push. I want to enter physics book. Or name of the book you can write, name of your novel or any book. I am just writing, mentioning the subjects here. Now if you want to display, then 3 option. So you can see here English, physics, last one is your physics. Now if you want to show it in a stack form, you can use a for loop, and from -1 you can start, and you can display each one separately. Like here directly list I have displayed. So first physics and then English, to show that it is in stack form. So that also we will do it. Now when I will select 2, which one will be popped? Physics will be popped. See, deleted book is physics. You can see here. Now it contains only English. Now if I ask 1 to enter a new book, now you will see, suppose chemistry I have written, you will see the physics is missing.
Clear? Enter. If you are using 3 to display, you will see English and physics. English and chemistry is here because physics 1 has been deleted. Understood how it is getting executed? So the last one which has been pushed will be popped first. So this is your program, and in exam you will be asked to write push program, pop program, and to display the this and menu. So I will share with you the last year sample question papers. All the question bank question papers I will share with you. Already CBSE has shared you the case study. So case study of stack in the next class we will do it. Clear? Anybody is having any doubt? When I will enter one, it is asking to enter a vowel. I am entering A, and then I am entering again one. Then I am doing display. It's showing E is the topmost element of the stack, and then A. And then if I enter choices 2, it will pop the topmost element. The pop element from top of stack is equal to E. And if I enter 4, it will come out of the program. Yes, correct. Good. Start. I am doing the question is write a program in Python to create a stack named stackVow which takes the elements as vowels and implement all the operations push, pop and traversal on stackVow. So here first I have initialized the stackVow as an empty list. Then I have written the first function for push operation. It is a menu driven program, so in the menu there is in the first there is poop, second pop, and first push, second pop, third display, and 4 exit. If the user enters user his or choice as 1, then the push operation will be done. In the push operation there is the user has to program will ask the user to enter a vowel. So after the vowel is entered, it will be appended in the list. Next, if the user enters his choice as 2, then the it will go to the pop def function. In the pop function, it will check if the list is empty or not. If the list is empty, then it will show stack empty, or else it will pop the element that is at the top of the stack. Then if the user enters the choices 3, then the all the elements of the stack will be displayed. If the stack is empty, it will print stack is empty, or else it will first show which is the topmost element of the stack, and then all the elements of the stack will be shown from the top to the bottom of the stack. And if the user enters 4, then the control will come out of the program. Why it is showing from top? Means I've written the program like that only, that No, it will stack implements which feature? LIFO, FIFO? miss LIFO LIFO. last first up. Okay. Yes, show me the output. Yes, miss. Miss output is showing, miss. What is it? Will no. Miss output is showing. No, it is not showing. Minimize the screen. Let Miss now. no, maybe delay is there. Maybe no, it is not showing the output. Miss wait. Yes, it is closed. Hello. Today we have going to stack question which has in which we have to implement a vowels in a stack and perform the operations such as push, show, etc. A stack is a LIFO order in which there is a last in and first out order, which we can enter elements first, and we can
take out the remove the elements from the first of the last of the record. Here I have used a stack empty list stack in which I have performed a def operation. Here I have checked the condition. If the entered item is a vowel, then stack will then it will be inserted into the stack, and else if it is not a vowel, then it will print it is not a vowel. Next pop item, in which I have checked the length of the stack. If it is equals to 0, then it will print that the stack is empty. Sound has stopped. Then I have used the Okay, so program is correct. Pop is popping the last element. Show will display the stack. So program is correct, and it is a menu driven program. So output is also correct. Item inserted successfully. So here output is push pop display exit 4 menus are there, and then it is showing A, and when you're deleting it, then it is deleting. Can you execute it once? yes. Again, push you can use. Now display. Then display showing Pop. The last one should be popped. I correct. Now display. Yes, correct. Good. It is correct. Clear, the last one which is inserted is being popped out, and then it is displaying the menu. Good.